Hello, everyone. So, today in our podcast session, we are honored to have our Finbish program alumni, Purva Zaveri, with us today, giving you a quick background of what Purva has achieved in now. So, he's 22. I would start rewards because everyone need to digest now what he has done in 22. So, he's 22 right now. He is a graduate of batch of 23 of Finbish program. Post which to campus placement, he started his journey into the world of capital markets at a firm called Virik Capital. They manage approximately 1,500 to 1,800 crore asset under management into equity markets. Post which Purva shifted to equity division of family office, One Up Financials, which is a family office of Mr. Jagdish Master and Mr. Deep Master. Purva has also cleared his CFA level 1 in August 25. Currently, he is a CFA level 2 candidate. He completed his graduation in May 2025. So by the age of 22, he has completed his undergraduation. He's a CFA level 2 candidate. He's a Finbish program graduate. And he already has 2 years of core finance work experience into equity research and portfolio management. With that, let me welcome you, Purva, to our alumni podcast session. How are you? Hi, sir. I'm all good. How are you? Thanks for the opportunity, sir. Uh, Most welcome, beta. I am perfectly fine. So, Purva, first thing that I want you to explain to all our listeners today is one very simple thing, correct? A lot of people don't get complete clarity about the role and life of a equity research analyst, equity research associate, what they exactly do in their career, what you are exactly doing right now. If you can help people understand this work profile, कि ये इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट करता क्या है फैमिली ऑफिस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, सो थोड़ा लोगों को हेल्प मिलेगा. Sure, sir. So basically, I'm an analyst working in a family office, as sir told, and my job is divided into three buckets. So first one is I look Oh, at new investments, new businesses. Another is I keep track of existing investments, and the third one is I also okay, need to keep the track of macro events because ultimately macro events also impact the businesses. So now I'll start okay, with the first one, like keeping a track of new investments. So there is okay, a 60, so there are 6,500 listed companies. It's a very big universe. And sir, correct. we look at, And so I look at, we are just in India, right? 6,500 listed company just in India. yeah, sir, it's 6,500 listed companies in the Indian capital, Indian equity markets. So sir, ठीक है. basically I look at companies in the sector in which there's a lot of bullishness. So जहाँ पे तेजी है, वहाँ पे मैं companies देखता हूँ. तो सर उसमें भी Okay, मैं फिल्टर आउट करता हूँ कि मैंने जो कंपनी सिलेक्ट की है वो कंपनी करती क्या है, उसके पियर्स क्या करते हैं, उसके okay, मतलब कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स का क्या बिजनेस है. एंड सर ऐसे में बहुत सारी टेक्निकलिटीज ही correct. होती है जहाँ पे हम लोग चीजें देखते हैं. गवर्नेंस देखते हैं कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, Okay, पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है. तो सर okay, बेसिकली अगर पास्ट में थोड़ा नॉर्मल परफॉर्म किया है, अगर दिख रहा है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो सर बेसिकली जहाँ बदलाव आता है वहां पैसा बनता है. That's a very correct. basic Yeah, thing. So, correct. sir, honestly, business is not like studying business is not just a desk job जहाँ पे आप पीसी पे बैठे हो और you are just reading con calls or presentation or annual report and you will make Correct. money. ऐसा नहीं होता. You Correct. also need to go on the ground. आपको चैनल चेक्स करने पड़ते हैं, आपको Okay, एग्जीबिशन अटेंड करने पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़ते हैं. यू गेट मोर सेंस कि बाकी ब्रॉडर लेंस से भी कैसे देख सकते हैं चीजों को. तो सर okay. हाँ, if I ask just one thing, बहुत सारे बच्चे और नॉन फाइनेंस वाले लोग भी ये देख रहे होंगे. What do you exactly mean by attending exhibitions or channel checks? क्योंकि बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि कोई स्क्रीन पे बैठ जाओ, रेशियोज कैलकुलेट करो, आरओई ग्रोथ रेट और यू बिकम एन एनालिस्ट, थोड़े बहुत चार्ट्स देखो. करेक्ट. आई नो एवरीथिंग हैज अ यूटिलिटी, बट अगर आप इन दोनों चीजों पे एम्फसाइज करोगे, सो आई थिंक पीपल विल गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव. सो बेसिकली चैनल चेक्स यानी आप एक्सपर्ट कॉल्स करो. एक्सपर्ट अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इंडस्ट्री पढ़ रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कोई एक्सपर्ट है जो 10-15 इयर्स का एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री के बारे में, अब मेरे को और ओके, डेप्थ में जाना है उस इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए. सो आई विल कनेक्ट विद ओके, दैट एक्सपर्ट. वो एक्सपर्ट का क्या लुक, मतलब क्या व्यू है उस सेक्टर पे,
उस कंपनी पे क्या व्यू है, इफ ही नोज अबाउट दैट कंपनी, सो यू गेट मोर सेंस कि आपके थीसिस और आपके रिसर्च वर्क में और आपको एडिशनल वैल्यू ऐड होती है इससे, इस जिससे Okay. आपका कन्विक्शन और अच्छा हो सकता है, आपका व्यूज भी चेंज हो सकता है, यू नेवर नो। टॉकिंग Okay. अबाउट सर एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन यानी बेसिकली सो कोई एग्जांपल पेंट एग्जीबिशन हो गया, तो पेंट एग्जीबिशन में सर पूरे वैल्यू चेन की पेंट कंपनीज आती है। सो यू फॉर एग्जांपल अब डिस्ट्रीब्यूट जो जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है पेंट्स में, जो कंपनी Correct. मशीन्स बनाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, तो बेसिकली टिंटिंग मशीन्स बनाती है। सो बेसिकली Correct. जो ये सारी कंपनीज एग्जीबिशन में आती है, सो यू गेट अ मोर सेंस कि हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली, प्रोडक्ट कैसा, प्रोडक्ट को लुक आप देख सकते हो प्रोडक्ट कैसा दिखता है, बिकॉज दे डिस्प्ले इट ऑन द एग्जीबिशन। और उधर आपका सेल्समैन से Okay. आप बात कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट के क्या फीचर्स अलग है। फिर उधर कॉम्पिटिटर भी अगर प्रेजेंट है, तो उधर जाके यू कैन गेट अ सेंस कि वो Okay. कॉम्पिटिटर का भी कैसा प्रोडक्ट है, क्या डिफरेंशिएशन है, सो यू गेट अ मोर सेंस। सो इट्स दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप चैनल चेक्स और एग्जीबिशन वगैरह अटेंड करो। Okay. Fantastic, Purva. I everyone would have understood कि खाली इसी में बैठ के डेस्कटॉप क्लिक करने का काम नहीं. It's a ट्रू सर। very rigorous work. या Yes. So continue. So this was the first part of your role. करेक्ट You said you सर। know everything. So now can we या talk about remaining two? so second is very basic thing. We have to keep a track of our existing investments in our portfolios. So Okay. so, so basically, her result. So there are basically there are 4 quarters in a financial year, correct? So every quarter a company gives you results, and many companies also do con calls. And at the year end, after the completion of financial year, there is a AGM also. So Correct. हमारी जो portfolio companies है, every Correct. quarter we have to keep the track of the results, we have to update our models, जो हमने financial model बनाया है उसमें quarterly numbers हम लोग update करते हैं, so that we can Correct. compare कि past quarter में कैसा perform किया, इस quarter में कैसा perform किया। दूसरा थिंग है, you have to attend the con calls, कमेंट्री चेंज हो रही है कंपनी की, पहले उसने गाइड किया है कि वी विल ग्रो एट 10%, अब चेंज कर रहा है 12%, तो सर देखा बदलाव Okay. आया, जैसे मैंने बोला बदलाव आता है तो पैसा बनता है, करेक्ट? Correct. So sir, you also Correct. attend the con calls. फिर उसके बाद you need to also attend the conferences as well. Every quarter or every after a 6 months जैसे conferences होते हैं by the sell sides. Oh. So वो लोग also they Oh. also organize an event जहाँ पे companies के management को बुलाते हैं, so that you need to be updated with your portfolio company. कुछ भी हो रहा है, Okay. you need to stay updated with your with the company. So that's the Okay. second part which we do. Okay. ठीक है. Perfect. So now coming on to the third part. So basically, that is, you need to keep a track of your macro events. So Okay. everybody, all the viewers right now know, everybody is quite worried US, Israel and Iran war. But Correct. sir, Correct. every macro event either gets you an opportunity or Correct. else कोई रिस्क हो जाता है आपके लिए। दो ही Correct. चीज है, इधर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई रिस्क बनता है। तो सर एक बहुत Correct. अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, कि अभी क्या हो रहा है सर कि एलपीजी का शॉर्टेज हो रहा है एवरीवेयर Correct. अराउंड द वर्ल्ड। So sir, Correct. आप देखोगे तो sir, it has also created an opportunity for one of the industries. So that's Okay. basically your induction cooking cooktops. Correct. Correct. And Correct. it's either someone wins, someone has to win, or someone has to lose. Correct. That's how things work. So Correct. it created an opportunity for companies in Okay. this industry. So So that's why it is important to track macro events. Yeah. so like what all activities आप करते हो to track macro economy because tracking globally all the key events going on in the India you have 12 13 hours that you can give to work correct or on the tops consistently correct तो ये macro वाले part के tracking करने के लिए what all habits have you built as an analyst जो आपको जब से आपने इंडस्ट्री में एंट्री लिया तब से आपको वो करना पड़ा और आप आज तक कर रहे हो लाइक अ सिंपल एग्जांपल कैन बी यार सुबह उठ के अगर आप 2 पेपर नहीं पढ़ रहे फाइनेंस इंडस्ट्री में इकोनॉमिक टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड लाइफ में तो यार आपका करियर कैसे ही चलेगा अगर आप महीने की एक मैगजीन नहीं पढ़ रहे फोर्ब्स फॉर्च्यून जैसी तो आपको कैसे समझ में आएगा करेक्ट तो व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू डू कि आपका थोड़ा मैक्रो इवेंट पे प्रॉपर ग्रिप रहे Okay. So I'll say basically we read newspapers. मतलब newspapers read करना is a must thing. Or else if you can't read a newspaper, Economic Times ऐसा ऐप है
you keep getting correct, updates every minute or so, notification आता रहता है. You can correct, also you can also keep reading the commentaries of the great economists like Nilkant Mishra. So he's a correct, very great economist, and you can also attend the you can also watch the interviews around the internet, what he's saying, what he thinks about the situation going forward. So there are many correct, aspects of tracking things. So there is another thing wherein you can also uh, go through other basically you can talk to people around who are keeping a track of macro events around you as well. How they are also thinking. You need to have that perspective in your mind. यू कांट बी ऑलवेज राइट दूसरे लोग भी सोचते हैं चीजें दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल या correct. ठीक है, fair enough. Good detailed explanation. So I think now people will understand कि although ये इंडस्ट्री में ग्लैमर बहुत दिखता है, करेक्ट फ्रॉम ट्रू आउटलुक, कि ये ग्रोथ है, ये नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल एंगल है, लॉन्ग टर्म में कमर्शियल मनी ग्रोथ इज गुड, बट दिस इज अ काइंड ऑफ हार्ड वर्क गाइस दैट एवरीवन नीड्स टू पुट इन, तब जाके आपका एक करियर नो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचता है. थैंक यू पूर्वा, मतलब मजा आया सुन के समझ के कि टोटल काम एंड टू एंड क्या होता है, क्या करते हैं आप. वन स्लाइड क्वेश्चन, थोड़ा सटल है, शायद कई लोग इसको कैच कर पाए, कि अपन ने बात बात में 3 वर्ड यूज कर दिए. आपने ज्वाइन किया था इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर्म, आज आप हैं इनटू फैमिली ऑफिस, करेक्ट, एंड वी आर आल्सो यूजिंग अ टर्म सिंगुलरली दैट्स कॉल्ड इक्विटी रिसर्च. और अगर अपन जॉब्स देखने जाते हैं मार्केट में या करियर प्रोफाइल, तो भी ये 3 वर्ड आते हैं कि यू कैन वर्क इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यू कैन वर्क इन फैमिली ऑफिस, और यू कैन वर्क एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट. अब ब्रॉडली स्पीकिंग यार तीनों ही लोग इन दी एंड पैसा ही तो संभाल रहे हैं. तो फर्क क्या है इन तीनों प्रोफाइल के अंदर, इफ यू कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स अंडरस्टैंड दिस. तो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ फैमिली ऑफिस वर्सेस पीएमएस. तो करेक्ट, काफी लोगों को लगता है आई एग्री टू यू सर कि मतलब सबको लगता है चीजें तो सेम ही रहती है, क्या डिफरेंस होगा. बट सर करेक्ट, इफ यू सी फैमिली ऑफिस मतलब वो खुद का पैसा है, उनका खुद करेक्ट. का पैसा. वर्सेस पीएमएस क्या होता है, पीएमएस में होता है देयर इज अ फंड मैनेजर. इफ यू डोंट माइंड थोड़ा पॉज करते रहते, डिस्कशन साथ में होता रहेगा. मतलब खुद का पैसा मतलब अपन ने कहीं बैंक से खुद लोन लेके अपना पैसा लगा रहे हैं, या अपन कहीं से पैसा लाए हैं, खुद का पैसा मीनिंग. So खुद का पैसा मतलब he has either the guy has his own business, उनका खुद का business है, and he is also growing his business and he is also investing money. खुद का पैसा वो अच्छा, हुआ. बेसिकली जैसे आज की डेट में आप जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल्स देख लो, कोटेक हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, अजीम प्रेमजी के साइड से भी अगर आप देखो, लक्ष्मीपति मित्तल, आप जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज देखो, क्योंकि उन्होंने कोई एक या दो बिजनेस करके बहुत पैसा बना लिया है. अब लेकिन जब खुद का एग्जिस्टिंग बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, करेक्ट, या हो सकता है आपने वो बिजनेस सेल आउट ही कर दिया हो किसी और को, तो सडनली यू हैव लॉट ऑफ कैपिटल, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़. नाउ रादर देन डूइंग योर ओन वन और टू बिजनेस, you try to become investor in multiple businesses. या वही अलग अलग बिजनेस पढ़ो, उनमें पैसा लगाओ, बट ये खुद का पैसा है, कोई और बिजनेस से कमा के अब अपन वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट ये अपन किसी को बाहर नहीं दे रहे, अपनी बना के अपने ऑफिस से मैनेज कर रहे हैं. एम आई राइट? करेक्ट 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 सर. ठीक है, सो समझा. ठीक है, नेक्स्ट. सो वर्सेस पीएमएस में कैसा रहता है ना, उन लोगों को क्या होता है दे हैव टू कन्विंस द क्लाइंट्स कि मतलब. सो बेसिकली पीएमएस इज आल्सो लाइक यू कैन डायरेक्टली गो एंड इट इज नॉट लाइक अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि मतलब आप बेसिकली 5,000 या 10,000 रुपीज दो और वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे. हियर आल्सो देयर इज अ मिनिमम टिकट साइज. सो इधर इट्स 50 lakhs इज द मिनिमम टिकट साइज ऑफ पीएमएस जनरली. तो 1 करोड़ कर दिया है. 1 करोड़ भी हो गया है सर. तो बिकॉज इसमें पीएमएस में क्या होता है दे हैव टू कन्विंस द क्लाइंट टू गिव देम द मनी so that they can grow the client's money. That's a very simple difference between family office versus PMS. ओके, सो एक पीएमएस के अंदर अगर अपन सिंपल टर्म्स में लाए, पीएमएस में ऐसा एक फैमिली ऑफिस जैसा डिपार्टमेंट भी रहेगा, सब रिसर्चर्स का, फंड मैनेजर का, सीआईओ का, लेकिन एक मार्केटिंग टीम भी रहेगी. मार्केटिंग टीम बड़े बड़े एचएनआईस को जाके प्रेजेंट करती है कि हम लोग किस आइडियोलॉजी से पैसा संभालते हैं,
हम आपके 1 करोड़ को 2 करोड़ 3 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका पैसा संभालने के लिए हमको दो। करेक्ट, करेक्ट, एंड फिर पैसा आया, देन वही सेम काम वापस से चालू हो जाता है, बिजनेसेस पढ़ो और पैसे लगाओ। करेक्ट सर। सो पीएमएस में जनरली ऑप्स टीम और मार्केटिंग टीम्स रहता है, वर्सेस हाँ, फैमिली ऑफिस में जैसे आपने बोला उधर। सो बेसिकली फैमिली ऑफिस में क्या रहता है ना, आप, अब चलो एग्जांपल है मुकेश अंबानी का फैमिली ऑफिस है सर, तो ठीक है। उनको तो सिर्फ अपना पैसा देना है और वो पर्टिकुलर 6 से 10 जन को देंगे पैसा। उधर कोई हाँ, ऑप्स टीम नहीं रहता, कोई मार्केटिंग टीम नहीं रहता, बिकॉज खुद खुद का ही पैसा है, दे जस्ट हैव टू ग्रो। तो उधर करेक्ट, ये सब टीम्स वगैरह का वैसा कुछ रहता नहीं है। एंड सर करेक्ट। दूसरा बात, बेसिकली देयर आर मेनी फैमिली ऑफिसेज जो पीएमएस को भी पैसा देते हैं टू ग्रो। ओके, ओके, तो दैट्स आल्सो वन थिंग। ओके। सो I may have 500 crore rupees of my own. Then maybe like 200, 300 crore I manage on my own with ओन my, but टीम, 200 crore still I distribute to other करेक्ट, PMSs or AI. करेक्ट। Right, ठीक है, सो fair. there is also one another difference. Basically sir, family offices का कैसा रहता है ना, they have a very longer horizon as well. I am not denying कि पीएमएस के फंड मैन पीएमएस का लॉन्गर होराइजन नहीं रहता, फंड मैनेजर्स का भी लॉन्गर होराइजन ही रहता है। बट सर पीएमएस में कैसा रहता है सर, देयर आर, सो इट इज अ इट इज क्लाइंट्स मनी। तो Correct. क्लाइंट्स का टेंडेंसी रहता है कि दे वांट टू जनरेट फास्टर एंड फास्टर रिटर्न। Every तो quarter उनको return comparison का आदत होता है। एग्जैक्टली सर। तो अब Correct. इस पे से आता है कि अब पीएमएसएस को एवरी क्वार्टरली क्या करना पड़ता है, दे हैव टू शो देयर परफॉर्मेंसेस एंड दे हैव टू मेक अ पिच डेक एज इन परफॉर्मेंस रिटर्न्स की क्या कैसा किया है, उन लोग को क्लाइंट्स को देना पड़ता है, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी पड़ती है। वर्सेस फैमिली ऑफिस में कैसा Okay. रहता है, देर इज नो रिकरिंग थिंग्स लाइक यू नीड टू शो द परफॉर्मेंस और एज इफ यू ऑल्सो डोंट नीड टू publish the newsletters. Basically, PMSs में क्या रहता है सर कि PMSs every quarter or so they publish a newsletter wherein they just write about the markets, and it is not compulsory. Many PMSs do that, but those letters are, I would recommend those letters are very good to, you should one should read if you are in this field. आई थिंक अगर अपने देखे तो लाइक फेज वन के हैं, सॉलिडारिटी के हैं, बनियान ट्री के हैं। Correct. करेक्ट। पोलेंट वाले काफी Exponent अच्छा का, लगता है। yeah, वाइट, अगर आप प्रेजेंटेशन टेक्स्ट देखो, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। very, करेक्ट। yeah. मतलब even we have learned a lot from their letters. Correct. Friend. Beyond capital, just not to miss Jigar The, Jigar ji. yeah, Burn Capital, Jiga Mistry, so so they write quite well. So, sir, Correct. so this is also one difference between family office versus PMS. Then there is also Okay. another difference which I would like to mention is basically family offices doesn't fall into much of SEBI regulation. मतलब उन लोग Oh, पे SEBI regulation उतने ज्यादा नहीं रहते as compared to PMS because लोगों का पैसा है। करेक्ट। correct. तो सर अब फैमिली ऑफिस के लिए क्या है ना, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्पेस अदर एसेट क्लासेस एज वेल, क्योंकि उनका यूनिवर्स बहुत बड़ा हो जाता है इससे। Like, एज in a nutshell, family office will also analyze startup, listed company, international businesses, any business where they find the future potential is better. या Whereas PMS would be only listed market. in listed, but they are also restricted to listed, but they can also invest in unlisted if they have a AIF scheme. AIF is alternative Okay. investment fund, so Okay. that also ठीक है. comes under SEBI regulation. Okay. But SEBI regulation, because there is finance वाले अपन 11 12 से ये word पढ़ते हैं ना कॉमर्स में, SEBI. fiduciary responsibility. Yeah. Right, setting regulations are good. ठीक है, fantastic. So ये third word क्या है फिर, equity research? Because सुनने में it Uh, gets confusing. मैनेजमेंट के अंदर भी you get equity research job, family office में भी you have equity research job, and there's a separate field called equity research, which is also got a self. So what is that actually? so basically sell side का काम क्या होता है ना, so sell side basically they help, they make reports. So उनका काम क्या होता है ना, बिजनेसेस पढ़ना, रिपोर्ट्स Okay. बनाना। सो द होल थिंग इज, अगर जैसे आज फैमिली ऑफिस या पीएमएस में somebody is वर्किंग, अगर किसी को कोई बिजनेस समझना है हाँ, एंड अगर सेल साइड के एनालिस्ट ने कवर हाँ, किया है वो बिजनेस, तो स्टार्टिंग में okay, स्टार्टिंग में इफ यू जस्ट गिव अ कॉल टू सेल साइड एनालिस्ट कि यार मेरे को ये बिजनेस समझना है, correct. तो आपका काम और आपका टाइम बहुत बच जाता है इसमें।
You just get a brief about the Okay. company as well, and unke reports if you read, so they understand. So basically they portray pura complete in understanding of industry, Correct. businesses, what about the Correct. management team as well, etc., etc. There's a lot of things. So usme basically their Okay. work is only to have research work. उनका Okay. काम है रिसर्च, वर्सेस Okay. पीएमएस और फैमिली ऑफिस में अगर आप देखते हो ना, तो दे आर मच कंसर्न, फैमिली ऑफिस एंड पीएमएस आर मच कंसर्न ऑन द वैल्यूएशन साइड, वर्सेस आई एम नॉट डिनाइंग कि इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि सर सेल साइड का भी फोकस नहीं रहता उतना वैल्यूएशन पे। ओके। ठीक है। करेक्ट क्योंकि उनका एंड काम आई थिंक खाली रिसर्च करके देना है, दे आर मैनेजिंग, तो दे डोंट हैव टू एग्जैक्टली टेक इन्वेस्टमेंट कॉल्स ना। करेक्ट, उनका इन्वेस्टमेंट कॉल है ही नहीं, बट हियर वी हैव टू इन्वेस्ट मनी ऑफ क्लाइंट्स और एज वेल अपना खुद का भी है फैमिली ऑफिस हो तो फिर उसमें देयर इज अ डिफरेंस। तो ये लोग करेक्ट। का काफी कंसर्न होता है वैल्यूएशन साइड में फैमिली ऑफिस पीएमएस वर्सेस आपका ओके। सेल साइड का उतना दे आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट इट, बट या दे इट्स नॉट रॉन्ग, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन दैट। ओके। ठीक है, फेयर है ना। ठीक है, गुड डिस्टिंक्शन। तो भैया आप जो भी, अगर बच्चा है सुन रहा हो और अप्लाई कर रहा हो कहीं पे, तब सोच समझ के करना। फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड अप्लाई फॉर जॉब्स और करने ट्रू। अकॉर्डिंगली। ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू गो टुवर्ड्स अ वेरी बेसिक थिंग, करेक्ट? कि इन द एंड यार, नो वन पिक्स अप अ करियर आउट ऑफ द ब्लू, करेक्ट? मैंने भी उठ के अपना करियर ऐसे नहीं बना लिया था कि यार चलो फाइनेंस में करियर बनाते हैं, देन लेट्स डू समथिंग इन एजुकेशन। देयर वर इवेंट्स दैट मेड इट हैपन. So you were a very young kid, correct? You started your journey to build a finance career immediately after 12th, correct? 17-18 साल के आप बच्चे रहे होंगे, correct? उस point of time पे, how did you bring this clarity कि बॉस मैं finance के लिए बना हूँ? And because you were a smart kid, you have been good academically throughout. We'll come on to that later on. So कैसे सोचा आपने कि यार I am made for finance, मेरे को finance में करियर बनाना तो सर आई वुड टेक द व्यूअर्स बैकवर्ड्स, आपको भी और थोड़ा व्यूअर्स को भी थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। सो सर है? चलते हैं। interest in finance started from 11th grade only, I would say. Because, sir, Okay. so I would just like to mention that even my dad is into equity markets, like he's a trader. Okay. So, sir, Fantastic. when I was in 11th grade, I used to sit around him, मतलब मैं उनसे बातें करता था. And when, मतलब, so there is one swing in our house. So जहाँ पे हम लोग every evening we used to sit. So that we Okay. used to discuss things. I was like, यार, अब तो यार 3:30 भी हो गया था, मतलब मार्केट बंद हो गया, फिर भी वो पापा के हाथ में फोन चालू ही है, एंड थिंग्स आर जस्ट still he is Correct. looking at the market. So क्या what is going on basically, ये भाव Correct. घूम क्यों रहा है, बात वो थी कि ये भाव घूम क्यों रहा है. I was just thinking the price, the Correct. stock price, basically the stock price, it's just a ticker. So basically why that Correct. stock price is moving, कुछ तो होगा ना. I did not have any idea कि Correct. मतलब किस बेसिस पे घूमता है, मेरे को वो तक नहीं पता था सर कि ये निफ्टी 50 क्या होता है तब तो ऑनेस्टली. बट सर that thrill, every day you see a different price, मतलब what is going on. I was like, पैसा तो बनता ही Correct. होगा. Correct. तो सर कुछ कुछ नहीं पता था मेरे को, आई डिड नॉट हैव एनी लॉजिक. बट सर मेरे को ये क्यूरियोसिटी तो थी हमेशा से, दैट आई वांट टू नो कि ये क्या चल रहा है. सो देन Okay. Okay. और ऑनेस्टली सर दैट क्यूरियोसिटी हैज लेड मी हियर. एंड अब समझ आता है कि वो स्टॉक प्राइस क्यों घूमता है. इट्स बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल, और एल्स कोई मैनेजमेंट का डिसीजन कोई चेंज हुआ है, या फिर इंडस्ट्री में कोई बदलाव Correct. आता है, बिजनेस में कोई बदलाव आता है, या बिजनेस की जो इंडस्ट्री है उसमें बदलाव आता है, तो स्टॉक प्राइस घूमता है. So that was a whole scenario Correct. that what led me to interest in finance. अरे, fascinating. So see, मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या बाहर आती है कि यार ये यंग बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग सीखना चाहिए, सी हाउ यू इंटरेक्ट विद योर फादर, करेक्ट? बहुत बार बच्चे ना और ये स्टूडेंट्स ना, वो बोलते हैं ना घर की मूली खेत बराबर, करेक्ट? मतलब बाहर बाहर घूमते रहते हैं लोगों से पूछते हुए करियर में क्या करना है क्या नहीं, एंड घर के अंदर अपने पेरेंट्स अपने एल्डर्स होते हुए बिल्ड देयर ओन करियर्स, देयर फाउंडेशंस, करेक्ट? वो कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं करते कि यार एक करियर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है, करेक्ट? सो एवरीवन हियर दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग. टॉक टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, एल्डर्स, चाचा ताऊ जी, पापा मम्मी, करेक्ट? Sisters, right? Everyone who has built a career in the field you think you want to go.
और जस्ट टॉक टू देम। क्या पता पूर्वा की तरह आपको बात करने से समझ में आ जाए कि मैं यहाँ करियर बनाना चाहता हूँ। अरे इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। चलो, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। माय मॉम यूज्ड टू से लाइफ में तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। एक, पढ़ाई क्या करोगे। दूसरा, आप शादी किससे करोगे। तीसरा, पैदा किस घर में होते हो। अनफॉर्चुनेटली थर्ड आपके हाथ में नहीं होता, करेक्ट, बट पहले के हाथ में होते। So you had 98% in 12th, correct? First of all, a splendid achievement. Congratulations once again for the same. थैंक यू सर, थैंक यू। आप 98% लाए 12th में CBSE boards में, correct? So you would have option of picking almost anything that you want, correct? Be it a top college like, SRCC, DU का कोई top college हो गया, correct? St. Xavier's हो गया, कोलकाता का, correct? You had options of professional qualifications, correct? Like Finbridge, right? What made you choose Finbridge program over other options that were available in front of you? Now, just a line of caution, everyone. This question is not a comparison between things, correct? It is about Purva's perspective. कि उसने क्या सोचा, why he felt for him that was better. Everyone can have a different point. Just to clear the air, Purva, let's not start unnecessary Yeah. debate. Correct. So very interesting question, sir. So basically, कोई भी होता, like anyone would have, directly went for elite college. मतलब मेरा honestly मेरा भी thought process वही था, 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, Uh, कुछ भी हो जाए, बढ़िया से SRCC correct. और those top elite colleges, because I did not wanted to go any mediocre college में. That was not. So like anyone would have picked up top elite colleges, uh, be it SRCC or be it Saint Xavier's. बट सर Correct. मेरा मेरा वो थॉट प्रोसेस था, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि सर आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, वो लोग स्पेशलाइजेशन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और मतलब स्पेशलाइजेशन एज इन कोई प्रोफेशनल कोर्स करना। सो दैट्स आल्सो लाइक इफ यू सी पीपल। ये चीजें मतलब सही है, ये चीजें मतलब इंजीनियरिंग और साइंस की फील्ड में तो 20-25 साल पहले ही आ गई थी। जब अपने को इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज करना पड़ता है एक डोमेन पे, डॉक्टर के अंदर अपने को कोई ना कोई बॉडी पार्ट पे कोई डिजीज के अंदर स्पेशलाइज करना पड़ता है, तभी जाके एक अच्छा करियर और अच्छा पैसा वाला एक ट्रेजेक्टरी बनता है। सो यू आर राइट यार। सो हाँ, कॉमर्स में भी वो स्पेशलाइजेशन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। Yeah, exactly. People doing CA and CFAs and everything. So, sir, basically, I was quite confused कि मेरे को क्या, मतलब what should I do? Because either specialization करूँ या फिर कोई elite colleges में चले जाऊँ. But honestly, sir, it was a coincidence or not, I don't know what. But sir, I attended a webinar by Shailesh sir, ओके। so ओके। who's from Finacle only. And in that webinar, he explained us how the what exactly the program is all about. Finbridge program is all about, and he mentioned कि basically Finbridge program में क्या क्या सिखाते हैं. He explained the whole structure, wherein you are given all the practical knowledge. Basically, there is no like a bookish knowledge कि कोई, if I would have opted for a directly a college, मैं क्या मतलब I would have just read books, scored marks, then मतलब कुछ practicality मेरे को सीखने नहीं मिलती, because here in the program he told us clearly कि it's completely a practical program from the start, from the first day only. You don't have to have that book pen and paper कि जहाँ पे वो सर बोल रहे हैं और लिखते जाओ, सर बोल रहे नोट्स बनाते जाओ, ऐसा नहीं था. So it was all completely a practical program. And sir, as I mentioned you above as well, मेरे को वो था curiosity मेरे अंदर कि सर ये stock price कैसे घूमता है. And sir, everything fell in my favor. मतलब ball was in my court. I feel क्योंकि सर मेरे लिए सारी चीजें अलाइन हो गई कि मतलब मतलब मेरे को क्यूरियोसिटी थी चीजें जानने की. और ये प्रोग्राम भी ऐसे स्ट्रक्चर किया गया था कि बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू दैट, learning about the businesses, what are the fundamental things, what you look in the business. At the end, I opted for this course, and it was quite, I don't have any regrets, honestly, that why did not I pick elite college over this course. But yeah, everybody can research on their own. बट रिसर्च तो और किया ही होगा वेबिनार के ऊपर, because as a young student you are always, yeah, matlab it's, as I said, it is one of the most crucial decisions of your life.
लाइफ में 3 या 4 ही मेन डिसीजंस होते हैं. सो तूने और रिसर्च भी किया होगा टू वेरीफाई थिंग्स और टू understand more integrity. So what was your that process? It might help other people also to follow the same process. ऑफ कोर्स. सो ऑनेस्टली ऐसे ही कोई वेबिनार देख के तुरंत तो कोई भरोसा करेगा नहीं कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, मतलब व्हाट Correct. इज इट अ प्रॉपर कोर्स और लाइक इज इट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स. ये अभी तो बता तो रहे वेबिनार में, क्या वो रियलिटी में है या नहीं. सो वेरी Correct. सिंपल सर, वेरी सिंपल. लिंक्डइन पे गया, जिन लोगों ने फिनब्रिज का कोर्स किया है डायरेक्टली उनको मैसेज किया कि हे आई जस्ट वांटेड टू टॉक रिगार्डिंग द कोर्स. एंड ऑनेस्टली Okay. सर, मैंने दोनों से रिव्यू लिए थे, जिन लोग ने पास भी किया था और जिन लोग ने पास नहीं भी कर पाए थे. ये मेरे बिकॉज को भी आज सो सर मैंने भी दोनों लोगों को फोन किया था एंड आई क्रॉस वेरीफाइड थिंग्स कि यार जो सर बोलते हैं, जो हाँ, पैकेजेस जो मिलते हैं, जो मीडियम पैकेजेस होते हैं, जो कंपनी जो रिक्रूटमेंट के लिए आती है टॉप कंपनीज, तो मैंने सब चीजें वेरीफाई की एंड आई कैन सी दोज पीपल ऑलरेडी प्लेस्ड इन दोज कंपनीज. सो आई डोंट correct, थिंक कि मतलब आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट कि भाई मतलब कोई गलत चीज है. इट्स नॉट एनीथिंग लाइक कुछ गलत है. एवरीथिंग वाज correct. परफेक्ट. सो देन आई So, ऑप्टेड फॉर फिनब्रिज. प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके ही किया, बिकॉज इट वाज अबाउट माय करियर सर. so see guys, that is the process. सुने सुनाए बातें मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है मैं भी वो कर लेता हूँ. सी दैट इज नॉट राइट वे टू मेक करियर. सी व्हाट पूर्वा सेड, मतलब आई हर्ड दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि आई कॉल्ड बोथ पीपल हु क्लियर्ड एंड पीपल हु फेल्ड बिकॉज दैट इज द राइट अप्रोच. जनरली मैंने इतना तो सुना है दैट पीपल अप्रोच स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड, बट फेल वालों को भी कॉल करके एक बार बात कर लेना, एक्चुअली दैट इज अ फैंटास्टिक अप्रोच. आपको प्रोज एंड कॉन्स, डिफिकल्टी, इजी पार्ट आपको सब समझ में आ जाता है. सो बीट एनी करियर, चाहे आपको फाइनेंस में करियर बनाना हो कि नहीं, इंडियन यू विल स्टडी समथिंग फ्रॉम समवेयर. प्लीज अप्लाई दिस टेम्पलेट बिकॉज एल्यूमनाई से ज्यादा क्लैरिटी आपको कोई नहीं दे सकता, स्पेशली इन एकेडमिक. जैसे डॉक्टर की प्रोसेस का क्लैरिटी खाली उसका पेशेंट दे सकता है, ट्रू. ऐसे एजुकेशन में आपको एक एल्यूमनाई दे सकता है. So, चलो. सो यू वेर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, करेक्ट? या. सिंस यू वर यंग, क्योंकि इतनी मेहनत हम जनरली कम बच्चों को करते हुए देखते हैं. अगेन जब आपने वेबिनार अटेंड किया होगा और आप जब डिस्कशंस के लिए फर्दर आए होंगे विद काउंसलर्स एवरीवन, सो फॉर पीपल हु आर hearing us for the first time, so there are basically 3 options for people. We run 3 categories of programs: CFA, FinBridge, and FinPlus. uh, both are for different category of student and different program structure. उसके अंदर अपन नहीं जाएंगे, बट तेरे पास ये ऑप्शन होगा, करेक्ट? CFA करूं, FinBridge करूं, पहले FinBridge करूं, बाद में CFA करूं, या पहले CFA कर लेता हूं बाद में FinPlus कर लूंगा, जो कि FinBridge का एक थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्जन है. हाउ डिड यू टेक दिस कॉल कि पहले मेरे को FinBridge करना है, मेरे को मार्केट में आना है, फिर काम के साथ CFA करेंगे हायर एजुकेशन का? ये तूने कैसे स्ट्रक्चर बैठाया? बिकॉज ट्रस्ट मी, out of 100 people, 50 are stuck in the same dilemma who come to Philippines कि क्या करना चाहिए. तो तेरा जजमेंट क्या था? तो सर आई बी वेरी क्लियर सर. सो इसमें वेरी एज आई टोल्ड फ्रंट. यू, as I told you ऊपर also, मतलब in the question before this one as well, that Shailesh sir took the webinar and he made us understood about the program structure of the program. So it was quite practical structure of the मतलब जो program था, it was quite practical. So I was very clear कि because I also talked to a alumni who to the person who has done only CFA, ओके. and अच्छा. I also talked to the people. सब जगह से सर क्रॉस वेरीफाई किया था चीजें कि क्या, बिकॉज आई वाज आल्सो इन द डिलेमा कि यार फिर सीएफए करते हैं, ये भी राइट. अच्छा ऑप्शन है. आई अंडरस्टैंड यार, एवरी स्टूडेंट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट ट्रू. तेरी बहुत ज्यादा ही थी. बिकॉज हो सकता है मेरे आई 70-75%, इफ आई एम गेटिंग समथिंग गुड, मैं इतना दिमाग ना लगाऊं और मैं वो प्रोग्राम कर लूं, करेक्ट, 2-4 लोगों से बात करके. बट आपके पास इंडिया की फ्यू ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल थे. एंड एज आई सेड, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है. सो यू आर नॉट रॉन्ग टू टॉक टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज करियर वाले डिसीजन ऐसे होते हैं ना जहाँ से यू टर्न लेना, इट्स नॉट दैट इजी यार. इट्स नॉट दैट इजी, स्पेशली इन इंडिया. वो तुरंत एक सोशल स्टिग्मा भी आ जाता है.
या ट्रू। Okay, रिलेटिव्स पढ़ाई. क्या बात करेंगे. So you talk to a few people who have only done CFA also. So go ahead. Yes. So then I also talked to a few people who have done CFA, but I just found that those guys were also struggling uh, for jobs. So then I connected everything. I just जॉब तो मिल जाता है बट जो चाहिए उनको कोर फाइनेंस में प्रॉपर काम वहां पे स्ट्रगल आता रहे. यू आर राइट. exactly sir. So basically what I thought was कि सर मैं पहले प्रैक्टिकल चीजें सीख लेता हूँ इंडस्ट्री में. आई शुड वर्क फॉर लाइक 2-3 years जो भी मतलब आई वांट टू वर्क इन द इंडस्ट्री. एंड उसके बाद ड्यूरिंग द इंडस्ट्री वेर आई वर्किंग उसके साथ साथ मैं सीएफए दूं. बिकॉज सर होता क्या है ना, सीएफए इज अ वेरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट. करेक्ट. आपको करेक्ट. सब चीजें लगेगी, यू विल बी वेरी फैसिनेट कि यार इक्विटी में ये पढ़ रहा हूँ, रिलेटिव वैल्यूएशन पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो आप करेक्ट. क्या पढ़ रहे हो. यू ओनली डोंट नो व्हाट यू आर स्टडिंग करेक्ट. फाइनेंस बेसिकली. इज राइट फील्ड. करोगे नहीं तो आएगा नहीं. एग्जैक्टली. तो सर करेक्ट. बेसिकली प्रैक्टिकल चीजें सीखी. फिर करेक्ट. मैंने सोचा सीएफए देता हूँ लेवल 1. सो काम देन के साथ. जब काम के साथ देता हूँ, सो इट इट मेड माई वर्क इजियर. क्योंकि मैं हाँ. जो रीडिंग अबाउट माई सीएफए एग्जाम, जो मैं एग्जाम के लिए प्रेप करता था, उसमें भी काफी हेल्प हो जाती है. आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस वेरी बीइंग वेरी पर्टिकुलर, इट इज नॉट वेरी इजी, बट करेक्ट. आपको हेल्प हो जाती है बिकॉज यू आर अप्लाइंग दोस थिंग्स इन डेली लाइफ. लाइफ सो तो समझ में आ रहा होता है कि बुक में लिखा क्या एग्जैक्टली. सो आई वुड ओनली रिकमेंड द व्यूअर्स द प्रोसेस कि आपको चीजें पहले बेसिकली फिनब्रिज करना चाहिए and उसके बाद सीएफए इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. और else as I also did, you guys can also talk to Elimini. आपको है. सब बातें क्लियर हो ही जाएगी बिकॉज सर एल्यूमिनाई से बात करके आपको पूरा अनबायस्ड ओपिनियन ही आएगा. क्योंकि सर देखो ये प्रोग्राम जो करता है फिनब्रिज, आउट ऑफ आई ऑल्सो रिमेम्बर 100 में से ओनली 25 पीपल ऑफ अस पास. तो पासिंग यू रेट. सो लेट मी अगेन पुट इट क्लैरिटी ऑन दैट फ्रंट. आपके बैच में 25% फिर भी हुए थे. इन सम बैचेस द पासिंग रेट हैज आल्सो रेंज टू 20%, 22%. दैट इज व्हाई okay. ब्रॉड मतलब कोई भी यहाँ पे आता है तो I think if someone takes an inquiry, he would be confused only. Do you want me to do Finbridge or you don't want me to do Finbridge? Because he stated upfront कि बस 9 घंटे का मेहनत है. 18-18, 20-20 महीने का. Then 1 year of industrial training. There also you work 9 hours a day. तब जाके career बनता है. Correct? And it is more expensive course also than doing just Yes, simple CFA. And correct. passing rates are between, we to state 20 to 25, not even 25. कि 20 to 25% आता है because यार अभी ठीक है. अभी lot of people would appreciate what you have done in your life. आज Yeah. 22 years in that you have 2 years of experience, one qualification done, under graduation done, second qualification in midway, already an analyst in market. But फिर अगर ऐसा career चाहिए तो वो input भी देना पड़ेगा ना. Nothing is there without effort here. Purva. So True, sir. So that it was, you're I would recommend all of the viewers, to talk to Elimini. जाके बात कर लो, you will get the reality check, honestly. तो So समझा. ये it will get easier. तो क्लियर हो गया. करेक्ट. सो नाउ यू आर लेवल 2 कैंडिडेट. करेक्ट. कब देने का सोचा Yes. लेवल 2? So August 2026. चलो ऑल द वेरी बेस्ट. जस्ट 90 डेज अवे. 90 Thank you, 100. sir. Thank you. गुड. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो जहां पे अपन ने छोड़ा कि यार फिनब्रिज चूज तो किया. करेक्ट. आपने बहुत बार यू यूज द वर्ड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. बट इन लोगों को समझ में आएगा नहीं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब क्या. करेक्ट. 1.5 year दिन का 8-9 घंटा पढ़ना. एंड एंड के 3-4 महीने तो 12-14 घंटा पढ़ना पड़ जाता है. करेक्ट. प्रोग्राम के क्लोजर पे. सो इतना एक्सटेंसिव पढ़ाई जनरली लोगों ने कॉमर्स में खाली सीए फाइनल वाले बच्चे करते हैं तभी सुना है कि सीए फाइनल के लास्ट 1 साल लोग 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे वो 18-20 महीने करना पड़ता है फिर परीक्षा में. सो व्हाट डिड यू एग्जैक्टली लर्न कि इतना सब पढ़ना क्यों पड़ता है यार. टोटल प्रोग्राम का डेप्थ और ब्रेथ है क्या? So I'll take the viewers into the depth of the whole my 1.5 year journey with the Finbridge program. So I'll just start with basically we had a basic foundation when we started with the program. So there was first module which was about basic foundation module.
wherein आपको अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में सिखाते हैं, बेसिकली इक्विटी, डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम. सो ब्रॉडली दीज आर द एसेट क्लासेस जिसके बारे में आपको दे स्टार्टिंग में दे टीच यू अबाउट इट. इन correct, अनदर मॉड्यूल इज बेसिकली पर्सनल फाइनेंस. सर अब आज की correct, दुनिया में अगर आप खुद का ही पैसा नहीं संभाल पाओगे तो लोग, हाउ विल यू मैनेज पीपल्स मनी ऑनेस्टली, correct, agree, एंड हाउ विल इवन समवन ट्रस्ट यू दैट correct, व्हाई विल आई गिव यू योर माय मनी correct. अगर आपको खुद का ही मैनेज Understand. करना है. People है वो इन्वेस्टमेंट इनकम सेविंग्स के फाउंडेशन इतने वीक है. मतलब ट्रू. I am sure you would have done a mutual fund evaluation exercise for your own family also at that point of time. यार अपने परिवार का पैसा कहाँ लगा हुआ है पहले उसको तो समझे. People सो don't even have basic health insurances and term plans यार in India. खुद का आंकड़ा इतना वीक है तो how they will become an analyst in the capital market world. yes, Yeah, right. true. So basically, we were also taught, how to analyze a mutual fund, and what you just don't see the returns of the mutual fund. You also need to compare with the benchmark. 10 साल का you take the 10-year performance. Who is the fund manager? What is the experience of fund manager? What is the fees taken by that mutual fund? So there are many very broad aspects. So they teach you basically personal finance. They also teach you about the mutual fund analysis. Now the third thing is, sir, in today's world, uh, basically Excel is a thing. Basics you should know about Excel, the formulas, and how Correct, how sir. to make presentations. We look up Lagana and all those formulas, sir. You should know this. Yeah, And we look up. I yeah. use the word we look up because everybody gets scared कि we look up क्या होता है. So We want to say some basic stuff here. yeah. Correct. So in the program, while they also teach you about the tech edge. It's called a tech edge module, wherein they make you understand about the Excel. Now the main, Correct. a little bit of toughness starts from module called financial statement analysis, where it's a very basic This was module. in the initial. Initial What few what you months, mentioned in tech is initial. Correct. correct, Yeah. correct. Take it. Post that, थोड़ा Take it. toughness चालू हो जाता है. That is the core module starts from your FSA, wherein basically how to they make you understand how to analyze a balance sheet, cash flow, income statement. And I would Correct. just like to mention कि जो इधर एग्जाम्स होती है ना, in these हाँ. modules, वो कोई Correct. MCQ वाला एग्जाम नहीं है आपका कि ABCD हो गया, टिक करो, आंसर टिक करो. बेसिकली दे ऑल्सो Correct. टेक GDs, लाइक ग्रुप डिस्कशन होते हैं, लाइव केस स्टडीज होती है, जो आपने सीखा है उस पर लाइव केस स्टडी अप्लाई करनी होती है. सो इट इज नॉट अ पेन पेपर एग्जाम, गाइज. जस्ट आई लाइक टू just tell all the viewers that. And because GDs also help you in improving your public speaking skills, basically it also helps you in further in your life, basically when you have to present businesses to others. So this is one Correct. thing. फिर उसके बाद आता है आपका another module called business analysis. More tough it gets from your as Correct. well, because business analysis is a Correct. 2 to 3 month module, wherein you are given a specific project to work on. और इसमें भी होता क्या है ना, so the faculty doesn't take your the one who teaches you doesn't take your evaluation. इसमें भी the external evaluators comes, जो already those who are working in the field. So then you get to know Correct. you get to know the reality, that where you are standing, what they are also thinking. So where you can also improvise Correct. yourself in that project. Correct. Correct. Post that, Correct. ये BA खत्म होता है, फिर उसके बाद हम आते हैं वैल्यूएशंस पे. अब बिजनेस तो समझ लिया, बिजनेस के बारे में सीख लिया, इंडस्ट्री पता लग गई, गवर्नेंस देख लिया, वी सॉ एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. नाउ वैल्यूएशन, अगर अब बिजनेस पड़ा है तो Correct. अच्छा लग रहा है, लाइक एट दिस वैल्यू शुड यू बाय दैट बिजनेस और नॉट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स. एक हो गया आपका रिलेटिव वैल्यूएशन, हो गया DCF, हो गया. बेसिकली देयर आर मेनी Correct. मेनी वैल्यूएशन मेथड्स. And then Correct. post that, after that, there are some top-up modules, like basically those who are interested in investment banking. So basically there are, you have to make Correct. models in investment banking. तो उसके लिए वो मॉडल कैसे बनाते हैं, how to make models in investment banking की कोई pitch होती है, how to make pitch decks for a company. So there are top-up modules like this. और Correct. फिर एक लास्ट में आता है sector master class as well. So basically you
you are taught about a one specific sector and what to look at, which things to look at in those sectors, उसमें क्या देखना चाहिए, उस सेक्टर में टॉप की कंपनीज कौन सी है, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, पूरा मतलब पूरा कंपैरिजन करवाते हैं। एंड देन के बाद लास्ट जो correct, फॉरमोस्ट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कैंपस, लाइक मॉक रिक्रूटमेंट, मॉक इंटरव्यूज आई मीन। सो बेसिकली वेरिन मॉक इंटरव्यूज में आपको दे हेल्प यू इन दे हेल्प यू इन preparing yourself, preparing you to, you know, when you go for interviews, so that also helps. So this was the broad whole correct. program in So 1.5 yes, years. okay. So now I think people would have understood, why such kind of effort and intensity is required. So, chalo, you would be learning all such things, correct? But passing rates are there for 20-25%. Now, it's not intentional, guys, that we have kept it 20-25. It's just the output that is needed in project work. Historically speaking, this percentage of students in a batch have been able to portray it, correct? So, how did you manage the rigor of the program? Because you cleared the program in first attempt, correct? Lot of students also cleared the program in second attempt, correct? And by the way, to all our listeners, we don't charge you repeat fees for second attempt to keep our integrity clear. कि जिसके अंदर काबिलियत है वो पास होगा, जिसके अंदर नहीं है वो पूरा प्रोग्राम एक और बार पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहीं ऐसा मैसेज ना आ जाए कि यार पैसे कमाने के लिए फेल हुए क्या बच्चे। इट्स नॉट दैट, इट्स अ प्रॉपर और न्यूट्रल इवैल्यूएशन। सो you cleared in the first attempt, Purva, correct? So, what strategy, management techniques did you apply that you could make sure that boss मेरे को ये first attempt के अंदर program clear करना है? So sir, I'll start somewhere from, you know, my even my brother was a, you know, scholar in our family. Correct, So sir, वो correct, motivation हमेशा से था life में that, you know, you post 11th grade, 10th तक तो बहुत I was doing a lot of fun in my life, full मस्ती चल रही थी। okay, But then 11th grade में okay, I understood it very clearly that you have to make something in your life, something out of it. So then, sir, now correct, coming on to this program, basically there are three mantras of, for me, there were three mantras of clearing this program: consistency, correct, mindset, and okay, hard work and discipline. okay, So, sir, coming on to consistency, sir, every day you just need to be consistent and never have that attitude of giving up, sir. The day you have the attitude of giving up, it will correct, get very tough for you. उसी दिन से और चीजें tough होती जाएगी. And sir, I'll be very specific. There will be some time correct, wherein you need to give 16 plus hours a day. I'm not even kidding, guys. I have done it. मैंने correct, किया है वो चीज. So last few weeks, correct, mein, you have to give your all. You have to give it all. And end is a very crucial in this program. So just I would like to mention to the viewers that you have to be very consistent. Another thing is, sir, correct, you have to have that mindset of, you know, clearing it in one shot. I had that mindset that I want to clear this program in one shot because, sir, correct, before also we had a talk, you know, that I have given up a lot of things. I have made sacrifices, the elite colleges which I wanted to go. So I wanted to prove myself correct, wrong that I have taken the right decision. So I had that mindset also correct, to, you know, clear it in one shot. Another thing is hard work and discipline, sir. So keeping, uh, so basically you just need to keep working hard and sometimes you might feel tiring because sir काफी सारे hurdles and वो obstacles होते हैं बीच में, working, it is quite tiring program. But sir, one thing which I correct, which I learned is, you know, if you listen to the correct, faculty, whatever sir is teaching you, and wahi then if you apply whatever the timeline he has given you, if you apply it on that day, or else if you do the work till that timeline now, you are good to go. Basically, you don't need to have that backup of the program. Basically, अगर आप backup मतलब backlog जो रखते हो ना program में, so that leads to, you know, you go 10 steps backward, which correct, which also correct, which also gets difficult to, you know, cover it up going forward. I still remember that one episode wherein my correct. mother called you, sir. I guess, कुछ we had a family wedding, अब उस पे जा रहा था। so I was quite tense. आई मैंने आई मेरे को याद है आपको 3 दिन का लीव चाहिए था। इवन फॉर दैट योर पेरेंट टुक अ प्रॉपर अप्रूवल के
3-4 दिन मेरे बच्चे का मिस होगा तो प्रोग्राम में इसका पासिंग का बैकअप का ज्यादा इशू तो नहीं आएगा. सो आई रिमेम्बर. एंड वो के 3-4 महीने वाला पीरियड था आपके बीए प्रोजेक्ट्स वगैरह वाला. एंड Yeah, वो quite. बहुत क्रूशियल स्टेज हो. यस इट इज. इतना मैनेज Very crucial. करके चलना पड़ता है. कंसिस्टेंसी. And sir, honestly, you also need support from your family and the faculty as well over here. दिस क्वेश्चन के व्हाट रोल डज फैमिली प्लेज जब आप एक रिगरस इंटेंसिव करियर पाथ की टुवर्ड्स चलते हैं. बिकॉज विदाउट फैमिली सपोर्ट आई डोंट थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल. So I'll be very honest, sir. From the start, my family was quite supportive, and I'm eternally grateful to them because I still remember one episode wherein my mother making coffee for me at 3 a.m. in the night. I just woke her up, ki mama coffee bana do. So I really felt guilty, to wake her up, but I had no other option. I had to because I had to be awake because I had the submission of my project on the next day. So I had to have my coffee and complete my things. Otherwise, I would have fallen asleep, and the next day would be the history. So that was one thing. And sir, I also remember one instance wherein that day I really felt, in the middle of the night, I guess around 4 a.m., I texted you, sir, and I had one small doubt. I know it was a little silly doubt, but yeah, that's I did not think, before texting you up, but and immediately at 4 2 a.m. I got your message. That I just realized that if sir is also ready to give us all, then why are we not? Why should not I clear the program? That's the thing. So honestly, sir, support from the family and the faculty also matters a lot to you. Yeah. But thank you, beta. You use that support, and we are very proud where you have reached, and I know you will go very far in your career. Thank you, sir. Uh, now we'll come on to the next question. Correct. Layer by layer लेते. Correct. तो प्रोग्राम हो गया, पढ़ा, मजा आया, बहुत मेहनत किया, क्लियर हो गया. फिर आया था डी डे. करेक्ट. कैंपस प्लेसमेंट्स. तो फ्रेंड्स के बच्चे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं. करेक्ट. So again, I come back again and again because your opportunity cost was very high. Correct. So campus placement process पे आपका क्या outlook था when you were going through that rigor? I can still recollect what happens even every year. 2 दिन के अंदर 4 इंटरव्यू, 2 प्रोजेक्ट, 2 कंपनी के एक साथ चल रहे. करेक्ट. इट्स लाइक बैक टू बैक वन कंपनी आफ्टर अनदर. राइट. एक वीक में 3 3 4 4 कंपनी, सूरत से इंटरव्यू, मुंबई जाके लाइव इंटरव्यू. करेक्ट. सो ये पूरा कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस आपके अकॉर्डिंग कैसा था? Was it satisfactory? Did you find good companies, good profile, good packages? In the end, was your career in the place that you imagined while sacrificing all the available options that were there in front of you? So honestly, when I heard about the big names, like, when they came on the campus, like Axis Capital, Unifi Correct. Capital, Girik Capital, Correct. Anand Rathi, likes of Solidarity. So I was pretty happy to, I would say that I was pretty happy to choose Finbridge as compared to my sacrifices which I have given up. Because, sir, I just felt when those companies came, whatever was promised to us in the when Celeste gave us the webinar, at that time also he mentioned that these are recruiters. So when those things also showed up, it was quite satisfying for me within myself. Yeah, yes, cheese. These things have happened. And sir, another thing which I would like to tell all the viewers is basically it was the whole campus placement process. So it was, I guess, around 1 month whole campus placement process, sir, if I'm not wrong, sir. What? And it is a Yeah, yeah, very yeah. rigorous and very, very rigorous and tiring at the same time because it is quite intensive. Back to where you need to give your mock interviews again and again for hours and hours so that you Correct. do well in the interview. So I still remember one episode again, Pratik sir in the picture, and it was around 11 p.m. at the night. I was giving the mock interview to one of the evaluators, and we were Correct. just discussing the things and I just got blanked. And another day I had my interview at a firm. That So the next day you had an
You had your interview. Yeah. So I just got blank and I was like, I was not able to recall things. I went completely blank. Then sir came in Correct. and the rest is history. Sir told me many things and he explained me a lot and and the rest is history. Guy. That's all. So I would just say that this program is quite rigorous and honestly, sir, people who are passionate about this. There's one unique thing about you, Purva. This is out of the context of finance and etc. But you have made it a habit to come back from setbacks, correct? Yeah. Going blank 12 hours before your key interviews, correct? Having a very big issue in health coming out of industry coming in, correct? So if you can talk about those instances, see, everyone sees the goody goody aspect, the success is correct, but no one understands the sacrifices or the intensity behind a good career. So यार ये आपके क्या setbacks रहे हैं personally? And इतने young age में भी आपने ठीक है अपने level पे कई setbacks देखे, correct? So what were those? How did you recover from it? And what will you guide, especially to the young generation जो कि बहुत छोटी छोटी बातों पे give up कर देते हैं? And how did you come back to the industry? How did you come back to the industry? Because I know you had to come out of the industry to that setback. फिर वापस से आना with equal or better power, yeah, वो portion में थोड़ा सा if you can highlight, it would be amazing. Basically, I had a setback. I'll take everyone to, back to October 2023. So wherein Correct. our campus placements was going on, the mock interviews were going on, and I had a bit of back pain at that point of time. But I was ignoring everything because I was at the very crucial stage of the program, and I could Correct. not make any mistakes over there. So I ignored Correct. the pain, back pain, and then I got placed into Giric Capital in December 2023. And then post Correct. that, for 2 3 months I worked over there. There was a slight back pain every day, but I just neglected it because I was working and I was quite focused on it. But then in March 2024, I came back to Surat for just 2 days. I came to Surat for just 2 days because it was holy time, I guess. So at that time, I Correct. came back to Surat, and one whole night I was not able to sleep. Oh, So and my whole back was completely, it was paining a lot. So the next day, I went to the doctor and I got my scans done. And the moment I got my okay. scans done, I got to know that I was diagnosed with slip disc. So, and doctor told me to have a bed rest for approximately 25 days, and another 3 4 months would be required to you have to do physio every day. So I lost all hopes, and then I had a word with my Okay. senior at Greek Capital, and he just told me. So we both had a mutual conversation, and me and Greek Capital both parted ways Correct. because of sir, it doesn't make sense, to do work Correct. from home for this longer time because the productivity also decreases in the work from home. I won't deny on that factor. And sir, another thing is basically Correct. it won't be fair on the firm side as well. And sir, in our Correct. industry, the work from home is not उतना देते ही नहीं अपनी इंडस्ट्री में. Not So okay. sir, It doesn't need it. so basically I left Girik and then post recovering from the bed rest, I s- I still did not leave working. So I talked to people. I did one. I made a small project on one company. I made a report on one company, and I had no thoughts of posting it on Okay. LinkedIn. And the opportunity pops out to me, and I called one of my friend who had given the interview at the firm who approached me, Correct. and the friend Okay. of mine asked me that if you are looking for a place, then why don't you give the interview at my place, at my firm? Okay. Okay. And the rest is history. I got placed into one of financial consultant. So that's how the Oh. whole episode worked out. So you, as soon as you got up from the bed rest, you started studying about new businesses. So just out of curiosity, you posted your research work on LinkedIn.
Yeah, and you got your interview opportunities right there. yeah, everything fell. फैंटास्टिक वो बोलते हैं ना, नसीब भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है. लाइफ एग्जाम्पल. True, sir. So uh, now I will start going towards slightly your work side, correct? I have been talking to you as you said since 2003, correct? ज्यादातर तो जब से आप मेरे पास पढ़ने आए थे. And consistently for this many years, I have seen you emphasizing a lot about networking. एक 19 20 21 साल का बच्चे को समझ में आ जाए कि नेटवर्किंग का पावर क्या होता है. It's a very unique and a very rare thing, because a lot of young students, they keep on hesitating in front of talking to their teachers and parents and siblings only. Forget about talking to a fund manager who's managing 3,000 crore, or senior analyst who is covering few businesses for last 5 7 years, or talking to a promoter of a 50,000 crore company. Correct? वहां तक तो बहुत दूर की बात आ जाती है. So as a young student, how did you understand that networking is so crucial in today's world, and what all activities you have been doing for the last few years to build a very powerful network of your own? So if you can highlight something on this front, Purva, तो I think बहुत unique insights मिलेंगे viewers. True. I would like to tell everyone that building network and connects is important in every field, but in our field, it's the most important thing. Because, sir, I'll tell you three major important things why I feel networking is important. So one is basically it also so networking helps you in your research process. You can exchange ideas and views. For example, if one of your connect has already worked on a company which you are assigned by your Correct, senior or by your fund manager, so you can just directly call your connect and have a have your views exchanged. Like he will explain you the brief about the company, what he thinks, what are his views, and what are his opinions. So you get to know what correct, others are also thinking. Another thing, correct, sir, correct, why I feel networking is important is basically, sir, so stock price क्या होता है, sir? Basically, it's a ticker only. The number correct, moves on. अब सर correct, उसके पीछे होता है बेसिकली फंडामेंटल रीजन, क्योंकि कोई भी correct, फंडामेंटल रीजन की वजह से स्टॉक प्राइस घूमता है. सो फॉर हाँ, एग्जांपल सर, आज एक अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो बेसिकली इफ दिसंबर 2024 दिसंबर 2025 में द सीमेंट प्राइसेस वर 50 रुपीज पर किलो. पर बैग का correct, प्राइस 50 रुपीज पर बैग है. एंड अभी ठीक है, एंड अभी आपका प्राइसेस चल रहा है 70 रुपीज पर बैग. सो सर, ठीक है, now, from where do you get this information? So basically, I called my correct, connect who has been tracking the cement industry correct, since last 10 years. So he might have a connect across hundred of dealers. So because he has to track correct, cement. So I'll just give him a call. correct, What is happening around, what is the thing. So correct, so the 70 rupees correct, example, I got it from the senior analyst. कि उन्होंने मेरे को बताया correct, कि the prices have moved up. So obviously, correct, अगर price per bag इंक्रीज हुआ है तो पॉसिबिलिटी है correct, कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनीज की. सो दैट कैन आल्सो लीड correct, टू इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस. सो correct, दैट्स हाउ correct, यू नेटवर्क विद पीपल. एंड दिस इज नॉट एट ऑल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, इट इज अ पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ना. correct. यू आर बस हैविंग अ नेटवर्क चाहिए. नेटवर्क विद डीलर्स. नेटवर्क चाहिए आपको. करेक्ट, Third point करेक्ट, is basically if you want any access to Bloomberg, or if you don't have access to Ace Equity, or you just want any करेक्ट, database, you want to read a report which you have not access to, so you can directly ask in your network if somebody has that report. So you can get those things very easily. So that's one thing, sir. करेक्ट, And करेक्ट, करेक्ट. yeah, that's one thing, one part of the question. Sir, you also told me about that how you have been maintaining your network and how you are networking with people. One thing was understanding importance of network. That you understood very well. But network is one of the most difficult things to build in life, correct? Because you are outside of a network.
नेटवर्क के Yeah. अंदर जाना, अपना नाम बनाना, वो नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना, what all activities have you done to build, and what kind of variety of network have you tried to build till now? So, Obviously, you are very young, ba- you will continue that for a very long period of time. अभी क्या किया है? so basically, sir, I try to participate in events. कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, कोई इन्वेस्टर Okay, मीट होती है, उधर आई ट्राई टू अटेंड. सो सो दैट्स वन थिंग, okay, you can grow your network. Another thing is, if you meet okay, that person in a event, सर फर्स्ट बार में तो कोई उतना ओपन होता नहीं है, so you need to also correct, maintain that network, sir. Basically, what I feel is many of us are building network, everybody is building network, but what people are not correct, focusing is कि वो नेटवर्क के साथ नर्चर, उस नेटवर्क को नर्चर करना, बेसिकली उसके साथ मेंटेन करते रहना, दैट यू नीड टू मेंटेन दैट नेटवर्क. So I try correct, and meet people on weekends. correct, I call them up, if you all are okay, free. So I'll get my 3 or 4 friends. They will get the 3 or 4 connects. So all of us in a group meet like 5 to 6, 7 of us. So that's how also you can grow your network. Basically, that's one thing. And sir, right okay, now, what so when I started networking with people, so I started with basically networking with junior analyst. पहले तो junior analyst से बात करना चालू किया. Then correct, I started opening up to went to senior analyst type of network. When I started correct. talking to them, and what are their views. We exchange ले- ideas. layer by layer. I सब लेयर started बाय doing लेयर that. भरे नेटवर्किंग के अंदर. Correct. Okay, Then I okay, also started networking with some of the fund managers. And then now what I'm trying to okay. do is, currently what I'm trying to do is basically, try and talk to promoters once you you are done with the meetings as well, so that you also have that, rapport with with the promoter, and you also get to know what is the mindset of the promoter, how he's thinking about the business more deeply. So that's what I am doing right now, sir. Okay. I think you also have started building your own community of analysts, correct? Yeah, sir. You have been filtering people and making your own community. So if you can highlight something on that front too, because इतने So, young age में इतना सब चीजें समझ पाना, कर पाना, एक intensity चाहिए life के अंदर इन सब चीजों के लिए. So yeah, what are you true. doing on that front? So broadly, we were a group of just 30 people. It was a very closed kind of group, and Okay, there was one day wherein me and my one of my friend felt that we should open this group up, so we can also get more and more people in this group, so that the network also keeps growing. So I have and made this a group is of and associates who are working in various PMSs, IBANs of India, correct? If I'm not wrong. yes, Okay, correct. ठीक है, There are people ठीक. over here who are working in iBanks, who are also working in PM, and I would also like to highlight that there are some 2 or 3 fund managers in the community as well. So Okay, it's a excellent. it's not a proper equity research forum kind of group wherein there are 1,000 people. So there are sometimes So when you close. feel shy. Yeah, it's a very close community. We filter out people. So basically, we tell them to fill a Google form. Then we just check where are they Okay, working, what is their LinkedIn profile, what is their experience, and then we allow them into the group. So we want to, sir, okay, I don't want to focus on quantum of people. I want to focus on quality of people, because that's what okay. matter to us. So So that's इस one initiative. community के अंदर आप करते क्या हो? What you guys do in this community of all the analysts and associates? Yeah, so very broadly simple things. So basically, so if, for example, I'll take one example. If I want to, you are also in that community, I'm in that community, sir. Okay. So today I am Correct. reading a business, and I want to, as I told you guys above as well, it also helps you in, exchanging ideas and views. Networking helps you in exchanging ideas and views. So today I want to understand one business. I'll just type in that Okay, group, anyone has looked at this X company. So if that person has looked, so he'll DM me that, hey, I've looked at this company. So I get to build my network, my personal communication with that guy, as well as I get to know what he's thinking about the company. So I also get a basic brief of the company. So that's how okay, the community is leveraging all of okay, us, so that we can leverage everybody's else network, as well as okay. we can grow and they can grow.
That's the whole main purpose of the community, sir. And Okay. basically, if I read a Okay. good news Nice. article, if you read a news article, if Correct. I read a news Okay. article which is very interesting, if I may miss out, so I can read that. So people keep Correct. sharing some updates. For example, any US Israel war, something is popping out. So if I'm working, I just get a notification on the WhatsApp that something has happened. So that's how you keep growing, Correct. and we exchange ideas, we exchange views, and we exchange reports and everything. किसने सही कहा है यार, your network is your network, and I'm so glad that you guys have been working on the same. Godspeed to this effort. Now let's go slightly technical, because it would connect better. So if you can highlight everyone uh your framework of analyzing companies and sectors, how do you pick companies and sector to analyze and analyst, correct? What triggers you look forward to in business while making sure your money is invested in the right kind of, business overall. So can you take us towards your investment framework? So basically, sir, I look for companies where there is growth. It is available at lower valuation. And sir, of course, उस Okay. industry और उस sector में तेजी होनी चाहिए. Teji in the sense there Okay. should be some triggers. There is some growth, there is some incentive by government, or any of the triggers. Okay. So, because sir, honestly, at this Okay. age, I have a very small capital with me. I have a very, very small capital. So, I want to grow it faster and Correct. faster. जहाँ पे growth है, and if it is available at lower valuation, the business is available at lower valuation, then why not? Correct. I would, of course, go behind that. Correct. And so, Correct. talking about my research process, sir, it's quite simple. I so basically I focus on top-down approach. So basically, I look at first of Okay. all the industry, the what is the industry growing at, Okay. what's the company doing, Okay. what are the products of that company, what is the business model, as in what is the revenue model for that company, पैसा कहाँ से कमाते हैं, what are they what are they Correct. doing to earn money, एंड बेसिकली Correct. वो इंडस्ट्री में अगर ये कंपनी है तो दूसरी भी तो कंपनीज होती ही है. कॉम्पिटिटर्स तो हर जगह रहता ही है सर, बिकॉज इट इज नॉट इजी, यू कैन बी अलोन. Correct. Then, So basically, please. you look at peers. Then we also do channel checks, and I also do the Okay. governance check as well. कि any of the red flags on the promoter side, for example, if they have given the guidance in the past, have they fulfilled it or not? We do that exercise as well, so that you get to know the integrity of the management as well from that. Yeah. And talking about some key triggers which I look in the company. So as you asked, so I like 4 5 main triggers. There should be the industry should be growing. There should be some tailwinds. The company should be growing, and any new product launch, if it is done by a company, if it is going to do some product launches, or something or the other thing is going to improve their earnings, or like basically the margin improvement can lead to earnings growth as well. So, or else, if a business is shifting from like basically the product mix of the business is changing, they are going from a commodity business to a specialized business. So that also improves your margins, which in turns improve your earnings growth as well. Getting so that's the Correct. whole process and the whole trigger for me to look at a company. So, in your entire process, do you also give some weightage to the balance sheet section, the cash flow section of the company? Do you like some improvement, some triggers on the balance sheet or the cash flow front also? Definitely, sir. Honestly, balance sheet ही भगवान है Okay. business में. It's a very Correct. simple rule. Correct. Income statement is the statement you. So basically, there are some there are basically receivables in the business. Receivables basically is आपने उधारी पे sales Correct. किया है. Correct. That sales ठीक है. figure will show you in your P&L. But Correct. real picture you will get in the balance sheet कि जितना higher receivables है, that means you have to take the money Correct. as well from the customer. So the whole real picture comes in your balance sheet and cash flows. So Okay. both of those things are very important, sir, because you get to know Correct. the clear picture कि पैसा ideally कब आ रहा है, कब जा रहा है पैसा. Where is the company Correct. investing?
So, you can track the capex as well from the balance sheet and cash flow. जो capex करेगा तो ही correct, growth आएगा आगे जाके. So it is very important to look correct. at balance sheets and cash flows. Okay. ठीक है, समझा, ठीक है. Fair enough. So, ठीक है, प्रोसेस तो आप कर रहे हो, करेक्ट, डे इन डे आउट. आप फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक यू एंटर द मार्केट इन December 23. Yeah. September 24 has been the market top, and it has been like around, broadly speaking, हो गए 18 महीने जितने on a market drawdown, consolidation. You can put any word that you want. As a young guy, think it is not a severe bear market as such, but for a young guy, when you are facing a sort of market correction for the first time, correct? How have you understood to handle this pressure? See, your particular portfolios would be small, limited. In firms in which you, your colleagues, your batchmates are working, those are 1,000 crore of corpuses, correct? 10%, 20% decline there leads to a decline of 100 crore, 200 crore, correct? राइट. सो आपने अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, अपने कलीग से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये मार्केट कंसोलिडेशन करेक्शंस को हैंडल करने का क्या एक फ्रेमवर्क सीखा है अभी तक? So honestly, market is like a roller coaster ride. करेक्ट, Upper niche. But we are focused on a long term thing. We we know करेक्ट, long term is the thing which you need to look at. So honestly, करेक्ट, I made a lot of mistakes. I used to sell it early, so earlier what I used to do is I used to sell it in a panic mode, and then I used to sell it on narratives. But now what करेक्ट, I've learned is, I have started doing more due diligence, and I also started to hold my positions while the panic period, which is the most important thing. Right now, what I see is people are just selling it on a panic mode. Like it seems like the whole world is going to end tomorrow. But then I realized that honestly, sir, you get so basically you should not sell in a very panic mode. And sir, another thing is basically what I used to do it earlier is, whenever I used to read a business, it was pretty early days. So whenever I used to read a business and I used to करेक्ट, see कि it's available at a lower valuation, then I should go and invest. I used to put all of 70% of my capital instant. So basically 70% of my position I used to make it instantly only. But then I realized, yeah, ओके, this market is like a roller coaster only. You get chances at the bottom. करेक्ट, It's not going to run away. You might miss on some, I don't know. But at least if you need to करेक्ट, just be patient, and you will get many chances as well. So there's nothing going to run away. And talking about the current turmoil, sir, करेक्ट. hoping for the best and praying that the war ends soon and the portfolio starts turning green. Everyone is hoping for the same. ठीक है, fair enough. So I think Yes, there sir. were two learnings. Build your position slowly. Don't sell in panic, and be patient and keep on learning about businesses. You will end up coming across a good one at right valuation. Am I correct in summarizing your uh, Yes, output? perfect, perfect. ठीक है, ठीक है, चलो समझा. Now let's go slightly towards a very generic concept कि जब इंसान nitty-gritties में चला जाता है ना, तो एक broad picture बुझ जाता है. See, in the end, a career in capital markets is all about wealth generation, correct? Both for yourself, your clients, your firm, everyone as an ecosystem, right? So this is sort of a first principle concept. पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, correct? Till now, again, you are at a fine young age, but still, till now, what have you learned about the art of capital building or wealth generation as a holistic concept? Purva? Everyone, so most of the viewers might know this formula. Everybody has learned it in the school as well, that A is equal to P into 1 plus R divided by 100 raised to N. So basically, P is your principal, Got it. R is your rate, Rate and of N is your time period. So I'll broadly say that many of the people are just running behind R, returns, returns, returns. मुझे 20% रिटर्न चाहिए.
तो अब एक एग्जांपल लेते हैं. So let's take an example. For example, there are two guys. One has a capital of 5 lakhs and another has a capital of 50 lakhs. 5 lakh पे if you make 20% return, so basically you are ending up with 1 lakh, 1 lakh of profit. Correct. And on the 50 lakh, if you make 20% return, you are ending up with a profit of 10 lakhs. So, sir, Correct. basically, you both are generating the same returns, but you see the difference. So, same Correct. skill, same returns, but you can see the difference between the amount. Correct. So, what I would Correct. like to tell the viewers as well, that one should focus on principle as well. You just don't need to completely just keep focusing on R. Returns is also important in markets, but one should also Correct. focus Correct. on principles. अब principle को कैसे focus करेंगे sir? Basically, you need to grow your principle. Either if you are doing Correct. a business, you grow your business, Correct. make profits Correct. over there, or else if you are doing if you are working, if you are an employed, then you have to Correct. basically focus on growing your salaries. That are the only two options. Correct. So Correct. other is just जहाँ से पैसा जो basically जहाँ से पैसा बन रहा है वहां से बनाओ. Basically, just focus on increasing your R. Just focus on increasing your P. Sorry. So so that's one thing which I would like to mention to the viewers as well. And sir, one another thing is, I'm not denying on stating that you should not do expenses. Like ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि सर घर ही मत खरीदो और ऐसा रेंट पे रहो, and don't buy your Correct. car or some basic. So basically you need to also do Correct. that, because after all घर भी तो एक asset ही है sir. So Correct. Correct. just focus on Correct. increasing your R. Like, That's what I want to tell. correct. So the very एक यंग बच्चे को ये पता है, वरना आजकल तो एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम इज लाइक रिटर्न चाहिए 30%, 40% per annum. I see young kids not focusing on their careers, their Yeah. jobs, their businesses, just doing some part-time trading and thinking they will become crorepati's. Those are some very bad mindsets that people should correct. And thank you for bringing it up. Correct. Now let's go towards the final closure here. One thing that I would like to ask you, on the technical front, के businesses पढ़ना उसके ऊपर investing call लेना तो ठीक है, but there are a lot of ways to make money. Special situation, quant, technicals, correct? So are you also focusing on such other activities in your career right now, or you are like hardcore business which are fundamental guy right now? So right now I'm a hardcore fundamental guy. But and honestly, Okay. sir, I am right now also doing my CFA as well. So, sir, right now my focus is to Correct. complete my higher education and do hard work, fundamental research. But I'm open to then Correct. I'm also open to learning all of these techniques, like cons and technical aspects as well. Because, sir, if Oh, you are able to generate return, then why not? That I would also prefer making returns from wherever I can. correct. ठीक है, fair enough. It is always better to have many investment philosophies in your bucket. You don't go कब काम लगे, just like a mechanic have all the tools. पता नहीं कौन सी गाड़ी के अंदर क्या खराब निकले, True. काम लगता है. Correct. Yeah. तो ठीक है. So you mentioned CFA. So two questions on the CFA front, then would be towards the closure. Okay, for higher education, why did you decide to go for CFA as a qualification? आपको उसके क्या advantages लगे थे? Because generally लोग पढ़ना छोड़ देते हैं टाइम के बाद करें, but you decided that the learning in terms of education should continue. So what was your framework for the same Purva? So basically, sir, many of the firms require CFA. So basically, Correct. higher education is also important. ऐसा नहीं है Correct. एक Cambridge कर लिया, so you are done in your life and you will just keep growing. You need to have Correct. you need to have your higher education as well. Sir, because it helps Correct. you in growing in your career, as well as CFA Correct. will also help you to uplift your resume as well. And sir, Correct. honestly, it will also help you in growing your remuneration, which in turns, I tell you, growing your P. So that's Correct. why I Correct. decided to do CFA. And because sir, I already did my FinBridge, so it made it a Correct. little easy for me, because sir, the Correct. concepts which I was learning in CFA, then I was already applying in my real Correct. life, all Correct. day job. So that was a compliment Lo- for me. Logic है बस. Correct. Correct. चलो good.
So इसी बात में because we teach both the program and CFA के अंदर तो we have been like one of the oldest in the country. एक बहुत बड़ा issue है that we consistently face. ये CFA में पता नहीं कहाँ बच्चों ने ये सोच लिया है कि घर पे बैठते हैं 2-2 3-3 4-4 साल और लेवल 1 लेवल 2 की खाली पढ़ाई करते रहते हैं, क्वेश्चंस लगाते रहते हैं. देन दे रियलाइज कि यार अब इंटर्नशिप करते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, बट इट्स टू लेट because they don't have any market or corporate exposure. They are already 21, 22, 23 by the time they complete their level 2 or level 3, right? So what is your I would put what would be your suggestion to people who are trying to do CFA and they are sitting at home and studying that? थोड़ा अगर आप उनको भी गाइड करो जैसे आपने फिनब्रिज वालों को किया है तो उनको भी हेल्प मिले पूर्व. So honestly, here, sir, what the recruiters are also expecting is because they are also very more reluctant, to make the fresher learn from the very basic scratch, basic like No one does explaining that in actually. the Excel as well. Basic is like explaining the Excel as well. So, sir, they are also very reluctant of making the Yes, freshers learn from the वही बात. start. इफ यू सी आजकल तो अपनी इंडस्ट्री में जोक बन गया है ना यार के काम मांगने के लिए काम आना चाहिए. नाउ व्हिच इज एन आयरनिकल True. थिंग. काम आता नहीं True. है तो काम मिलेगा कैसे बच्चे को. करेक्ट. यस, So, कंटिन्यू. so एक मिनट, basically, सॉरी. yeah, so recruiters are also very reluctant of, making a fresher learn from a scratch. And honestly, sir, CFA, you you should do CFA. I'm not denying that. But if you are if you are if you are doing it from the basically if you are doing Finbridge and then doing CFA is more better because as I told the viewers as well that practical knowledge and then applying it and then doing the theoretical part will help you in your theoretical exams at the end. And sir, another thing is there's a lot of competition in the industry. Honestly, the early level jobs are also getting very competitive because of AI. And एआई. on करेक्ट. and when I was also in my industrial training period, I was also given jobs of like equal to senior level job only, sir. It was not anything like a basic entry level job as well, honestly. So I would I would also recommend, and it's on the viewers as well, that whatever they want to do, they are free to do. No one is stopping them, of course. But you should also do the practical बेसिकली work first. आई वुड समराइज इन अ मच बेटर वे, Yeah. बीइंग न्यूट्रल व्हाट पूर्वा इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. के बॉस आप कुछ भी पढ़ो, इस पॉइंट इज आप कुछ भी पढ़ो बॉस, आपको खाली सीएफए पढ़ना है, आप सीएफए पढ़ो, लेकिन आप प्लीज उसका प्रैक्टिकल काम साथ में सीखो. आप लेवल 1 करो, आप मार्केट में इंटर्नशिप्स करो, फिर उसके साथ अपना लेवल 2 लेवल 3 करो. लेकिन खाली घर पे बैठ के पढ़ते रहे, चाहे वो कोई भी क्वालिफिकेशन, आपका करियर आज की दुनिया में बनना बहुत डिफिकल्ट है. ये True. रियलिटी आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी आप अपने करियर पे एक एहसान कर. दैट इज Well, व्हाट इट इज. yes, I डोंट meant, yeah. पुट इट. ठीक है. वन लास्ट क्वेश्चन, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव गिवन मी योर 1.5 year. अगर कोई रिलीजियसली इस चीज को सुन ले, आई थिंक पूर्वा आपने बहुत बच्चों को हेल्प किया होगा उनके करियर में आज, कि वो सही डिसीजंस ले पाएंगे, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन देम आउटपुट, यू हैव गिवन देम प्रोसेस. बोलते हैं ना, डोंट गिव समवन फिश, टेल हिम हाउ टू फिश अ फिश. करेक्ट. True, sir. बट वन लास्ट एडवाइस, आप भी बच्चे ही हो, भी ऐसा नहीं आप बहुत बड़े हो गए, बट स्टिल the 2 3 years of work experience that you have gained till now, the careers that you have built, standing today, what would be your advice to a 18, 19, 20-year old, 21-year old who is looking forward to, making his career in finance? आप उसको क्या advice देना चाहेंगे? I would, just say that if you want to make a career in finance, and that too in equity research domain, it is not a cakewalk. Correct, Honestly, as I mentioned, there is a lot of correct, competition correct. because there is a lot of competition But because of AI, and everybody is, you every I see many of the young people just getting influenced from the Instagram that you will be able to make return here, इधर से ऐसा पैसा बनेगा and everything. So
not so making money in every business is not easy at all. There are times when you lose money, and I have lost money. That's why I'm telling all the viewers that even I have regrets of regrets in that one company wherein I just trusted the management and my 50% of the capital got wiped off. But yeah, that's the part and parcel of life. You can you that's how you learn. So making career in finance is not easy. Correct. So I would recommend the viewers to just for just read some kind of just go through some kind of articles on finance, or just see YouTube videos, 3 or 4 YouTube videos, wherein you get a sense that how things work practically as well. So and if you start Correct. loving to एक दो books they can read to just understand कि yeah उनको finance में curiosity भी आता है कि नहीं आ रहा है. yeah yeah true. Correct. So that's one thing that wherein you can get to know that if you're really interested in finance. And And if you are then interested in finance, and if you like to, play with numbers and love reading about the businesses, then I would I would say the viewers that you should also look at Finbridge, or else you should also look at CFA. And if you are planning to do postgrad, then also you can gain some experience and then go for your postgrad. That would be my recommendation for postgrad students as well, because even I have plans to do my postgrad. So right now what I am also doing is gaining some experience, and then I might plan to go for postgrad. So that's my whole Correct. Correct. advice to all the viewers. Fantastic, Purva. Just one more addition and last addition on my side. कि बहुत बार ना गाइस ऐसा होता है कि आपको कहीं जगह करियर तो बनाना है, आपका क्यूरियोसिटी भी वहां पे है, बट स्टिल एक बार फैमिली का रिक्वायरमेंट और वो करियर मुझे वो चीज दे पाएगा क्या, उसका मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोई टीचर या करियर काउंसलर आपके लिए नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन, मैं बहुत बहुत एक्सट्रीमली पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ, करेक्ट, और मेरे को बायोलॉजी पढ़ के इंटरेस्ट लगा कि मेरे को डॉक्टर तो बनना है, करेक्ट, बट मैं बैठा, मेरे मेरी फैमिली के टेक सिचुएशन, एक्सपेंस सिचुएशन सब समझे, और उनसे मैंने पूछा कि क्या ये मेरे को 8-10 साल का पढ़ने का टाइम मिलेगा क्या, इतना पैसा लगेगा, अपन क्या इसको अ, थोड़ा कम स्ट्रेस लेके अरेंज कर पाएंगे, एंड मेरे को लगता है कि दिस मैथ इज नॉट वर्किंग आउट, करेक्ट, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ गुड करियर, बिकॉज कोई भी करियर बनाने के लिए आपको 8-10 अच्छे साल देने पड़ते हैं. तो आपका फैमिली का बैकग्राउंड या अंडरस्टैंडिंग स्लाइटली मैच होना चाहिए वो करियर पाथ से. अगर नहीं भी हो रहा है, still your family should be on board to then support you. Otherwise, you will have to take a U-turn in your career later on. And trust me, taking a U-turn in career is a very, very difficult choice. क्योंकि फिर वो एक social stigma भी hit करता है कि अरे चालू किया था इसने छोड़ दिया. Correct? That kind of thought process also works. So just keep that thing also into account along with what Purva recommended you guys. And we are at the close. Thank you, Purva, so much for Thank you, your sir. time, My pleasure. answering everything so candidly, honestly, just stating, what it is right in front of everyone. And it was my honor to interact with you. Hope to see you soon. Thank you, sir. Thank you so much.